Okay, so welcome to the Red Side, the first ever podcast. और मेरे साथ है दिव्यांश, द लिवरपूल फैन। कैसा लग रहा है यार? पहली बार कर रहे हैं। Happy with the podcast and the results as well. मतलब दो like two wins on a trot. भाई ये सीजन नहीं हो रहा है ये चीज ठीक है। और क्या नहीं हो? डर लगता है ये वाली बात के लिए कि यार ये वाला सीजन नहीं हो रहा है ऐसा। दो विंस लगातार नहीं आ रही है स्पेशली मर्सी साइड डर्बी विन दैट वाज वेरी क्रूशल। मैं अगले दिन छुट्टी ले लिया था ऑफिस से। मतलब 1:30 बजे मैच आ रहा है। मैं बोल दिया कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। यार इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट गेम फॉर अस। It like if it hasn't already been, it could have been a season defining game. या आप एक नए मैनेजर के साथ जनरली क्या होता है, नया मैनेजर आया, इफ इट्स नॉट ग्राहम पॉटर देन वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर कोई नया मैनेजर आया तो जनरली विंस आती हैं, जो हाँ, एवर्टन के साथ आ रही है। ठीक एवरटन। है, एवर्टन had thrashed, not thrashed but thrashed when it comes to a relegation side beating the top side. They had won against Arsenal 1-0. And we always know, like Sean Dyche's teams are heavy defensively. Like he puts very much focus on defense. And उसके चक्कर में मुश्किल था। देखो आर्सेनल नहीं ब्रेक कर पाई, अच्छे चांसेस वगैरह जो भी थे बट नहीं ब्रेक कर पाई। रिजल्ट ये रहा, एवर्टन विद गुड लाइक हेडर, टारकाउस्की का हेडर था आई थिंक, हाँ, दे वन। उसके बाद दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस, नया मैनेजर आया, नए चेंजेस आए, दे डिड अ क्लीन शीट विच इज नॉट इजी टू डू अगेंस्ट आर्सेनल। उसके बाद क्या हुआ, लिवरपूल आए, वी वन। इट वॉज गुड, इट फेल्ट गुड अंदर से। एंड आई रिमेम्बर दैट क्लॉप ने जो उसका फिस्ट बम था, नहीं दिख रहा था वो चीज। कितने दिन आ गए थे, कितने मैचेस आ गए थे जहां यू आर लाइक आफ्टर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उसमें यही हो रहा था, वी हैव टू स्टेप अप, प्लेयर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा नहीं जा रहा है सीजन, वी हैव टू डू राइट। इतने जब हमारे सीनियर प्लेयर्स, फबीनियो, हेंडरसन, उसके अलावा सलाह गोल नहीं कर रहा है, सलाह कई बार बहुत वाइड जा रहा है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, लेफ्ट फ्लैंक पूरा खाली हो रखा है हमारा। वी हैव प्लेड फकिंग एलेक्स ऑक्सलैंड चेम्बरलेन ऑन द लेफ्ट साइड। आई मीन दैट हैज बीन, वो बंदा 3 साल से फिट नहीं है, और जब वो फिट आ रहा है उसको सेंट्रल मिडफील्ड में नहीं खिला रहे हम लोग। हाँ। हम उसको नंबर 10 नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं उसको लेफ्ट साइड। अच्छा। तो लेफ्ट से यार, बीच में कौन है, नूनेज आ रहा है, और कोई है ही नहीं। साला अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आई थिंक विल टेक दिस लाइक आगे भी पॉडकास्ट में, बट साला और ट्रेंट आर्नल्ड, these two have been one of the major causes of the winning Liverpool, but these two were not firing that much. Salah hasn't performed like bad when it comes to performing. आप सीजन वाइज अगर आप देखोगे उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है उसके बुरे नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट वो साला की कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं। द हाँ, गाय, जो उसका फर्स्ट वो था, आपका सीजन आता है, द गाय स्कोर्ड मोर देन 40 गोल्स। इस बार नहीं हो रहा उससे। आप पोजिशनल चेंजेस ले लो, जो भी ले लो, बट इस बार नहीं हो रहा है तो। एंड देयर वाज नो कंपटीशन एज वेल। तो चीजें इतनी मुश्किल थी, बट आई एम रियली हैप्पी एवर्टन, लाइक उनके अगेंस्ट भी वन, बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। सेकेंड थिंग, अपने आ जाते हैं ये जो दूसरा मैच हुआ अभी, लास्ट मैच न्यूकासल। न्यूकासल के बारे में मैं बोलूंगा आगे। लाइक दे आर अ स्पेशल टीम टू बीट, दे हाँ। आर सो फकिंग रिजिलियंट। वो ड्रॉ निकाल देती है, वो जीतेगी, वो हारेगी नहीं, वो ड्रॉ निकाल देगी। वी वन अगेंस्ट देम एंड इट वाज अ टेस्टमेंट दैट टचवुड समथिंग माइट बी चेंजिंग। या प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, जोटा आ रहा है, जोटा wasn't firing that much but जोटा, everyone knows what जोटा is। जोटा वापस आ रहा है, फिरमीनो आ रहा है, फिरमीनो वही काम दोबारा कर रहा है जो अपने पहले वीडियो में आपने बोला कि फिरमीनो हैज बीन द मॉडल। फिरमीनो हो गया, हैरी केन हो गया, जेसूस हो गया, ये वो स्ट्राइकर्स है जो जो कंपेल करते हैं कि अपने वाइड प्लेयर्स को कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे रहूंगा। हम्म। हाँ। these are very these are really well, like well built players. They know, they have their eye for goal as well. And but they are not just satisfied with that, they are really very happy। इतने ज्यादा खुश लोग हैं ये दूसरों की खुशी के अंदर। तू गोल करना,
फिरमीनो का सेलिब्रेशन मैंने देखा है, वो ताइक्वांडो किक वगैरह जो मारता है भाई, साला गोल कर रहा है, मानो माना गोल कर रहा है, उनसे ज्यादा खुश ये होके चल जाता है। इसका असिस्ट भी नहीं होता, इसका असिस्ट भी नहीं होता। ये लिवरपूल का सुरेश रैना है, ये असिस्ट नहीं हो रहा, ये बंदा आगे जा रहा है भैया, मैं खुश हो जाऊंगा। एंड इट वाज सो गुड टू सी दैट कि चलो ठीक है, दोनों एटलीस्ट आए। आई एम वेरी होपफुल कि हाँ ठीक है, फिरमीनो नोज दैट ही इज नॉट द स्टार्टर with having like this Nunes as a striker, having Cody Gakpo as a striker, having this guy as a अपना जोटा एज अ स्ट्राइकर, फिरमिनो नोज कि वो सेंटर नहीं खेले, बट जो वो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। जो उसका सो नेचुरल बॉर्न ब्राजीलियन फ्लेयर है वो और किसी के पास नहीं है। फर्मिनो का फबीनो फबीनो नाम के लिए ब्राजीलियन लगता है मेरे को, वो फ्लेयर नहीं है फबीनो के पास, नहीं, बट फबीनो के पास जो इंटेलिजेंस है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि फमीनो इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्क्वाड प्लेयर फॉर अस। what Milner and what Milner is doing, Firmino can do that for us in the एग्जैक्टली। later stages of the career. And I'm really hopeful that he stays. Yeah. गोइंग बैक टू दिस न्यूकासल गेम, स्टेटमेंट विन थी भाई लिवरपूल के लिए, क्योंकि तुम कितने ही टाइम से जीत नहीं पा रहे हो। तुम ब्राइटन के सामने 3 बार खेल चुके हो विद इन लाइक 3 वीक्स, और हार चुके हैं कई बार। हार चुके हो 3 बार, और घर पे नहीं जीत पा रहे हो, एनफील्ड पे नहीं जीत पा रहे हो, और उसके बाद यू गो एंड यू बीट एवर्टन विद शॉन डाइश। Everton with वो Sean Dyche, yeah. यू फाइनली गेट अ ब्रेक थ्रू, और उसके बाद तुम जा रहे हो, यू गोइंग टू न्यू कासल यूनाइटेड, यू गोइंग टू सेंट जेम्स पार्क। वो जब माइक एशली उनका ओनर था, तब भी दैट वाज अ हार्ड ग्राउंड। दैट हैज ऑलवेज बीन अ हार्ड ग्राउंड टू एनी टीम, फॉर एनी टीम। ऊपर से दिस इज अ वेल ड्रिल्ड न्यू कासल टीम, और हु आर ऑल्सो गनिंग फॉर टॉप, और तुम Yeah. you go to Newcastle. This is a ground that I am not hoping. I'm not counting on Arsenal to win, because I don't think we will win Mhm. there. For Liverpool to It's a go hard there game. and It's a hard actually, game. it's a very hard game. And for Liverpool to go there and beat Newcastle, that's a statement. And that's why I feel like Liverpool are back in the top four I race. mean, credit to Newcastle as well. I mean, they lost their keeper. They were 2-0 down within the first 20 minutes. And Hmm. they lost their keeper as well. But you all know like what Martin Dubravka is. Like last season, Dubravka was very like they were like he was very clinical to their success as well. और सिर्फ दुब्राव का, कोडी गाक्पो का वो उसका सेकंड गोल हो जाता, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बंदे ने बहुत तगड़ा हेडर मारा था, उसने सीधा इसके पास दे दिया, बट उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस आया डुब्रावका ने अच्छा काम किया, लाइक उसने कोई खास एरर्स नहीं किए। और ना सिर्फ डुब्रावका ने, उसके बाद आई थिंक चेंजेस जो थे शायद 4-4-1 में कन्वर्ट हो गया था एक बार के लिए बीच में न्यूकासल। एंड आई थॉट बुरा नहीं अगर 4-4-1, यू आर डाउन वन मैन, इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव अ 4-4-1 एज वेल। आई मीन तुम्हारा डिफेंस कहीं नहीं जा रहा, यू कैन स्टिल स्कोर गोल्स। आई मीन आई नेवर थॉट लाइक दैट कुड हैव बीन। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यू कैन ऑलवेज हैव यू कैन ऑलवेज गो फॉर लाइक 3 डिफेंडर मैन लाइक टीम, वो तुम उसके ऊपर काउंट कर सकते हो, बट हैविंग 4-4-1 दैट वाज गुड। आई मीन दैट वाज अ गुड टैक्टिकल चेंज। एंड नॉट इवन दैट, उसके बाद लाइक वी कुडंट स्कोर गोल्स, वी डिड केम क्लोज, बट उसके बाद भी नहीं निकाल पाया। आई थिंक दैट्स अ टेस्टमेंट टू व्हाट न्यूकासल हैज बीन दिस सीजन, लाइक दिस सीजन। Even before you guys scored your first goal, Newcastle had two big chances. एक I'm telling you, अल्मायरन वाला चांस, I I tweeted Allison like how clinical Allison has been for us. या I mean, I think his impact has finally, he and Van Dijk, they both came in the same transfer window, right? I think his impact has been higher than what Van higher Dijk's than been. Van Dijk. Exactly. Exactly. Finally, a Because Liverpool fan gives Alisson the respect he deserves. because I mean Van Dijk hasn't been that Van Dijk since the past 2-3 seasons. Like, I mean, yes, I know because of that fucker Evertonian. He missed one season. ठीक है. I hate that. I hate like the smug face of him. And We'll come he to missed him. one season. We'll come to Huh? him. We will come to him in the Everton game Yeah. when he
when he was on the M5. He was going to London when Salah was going to score. So that was a great moment to see for even for Arsenal fans, That was because this guy happening. is playing number one instead of Ramsdale for England. Not even Ramsdale, How? not even Ramsdale, not even Ramsdale. See, I'm not saying Ramsdale is the best. I'm saying he is playing number one instead of Nick Pope as well. Big Pope as well. Absolutely. You have two really good keepers there. I mean, for fuck's sake, Spain cannot even have David De Gea. I'm not saying that it's a really good move by Spain, but they don't keep like they don't have David De Gea in their squad. They have Unai Simon and they have that Brighton guy Robert Sanchez and they have the Brentford guy David Raya. All three have done superb job. Like no discredit to that David De Gea, but these three have earned their place as well. And when you see what this Evertonian man has done, I don't even want to take his name. This Evertonian man has done. I think Ramsdale or Nick Pope should they do deserve at least they should play more matches than they have played in their career for England. Uh, Going back to the Newcastle Liverpool game, स्टेफन बैजेटिच, नाम सही बोल रहा हूँ मैं उसका? Bajcetic. बाजेटिच, या तो मतलब he is looking good for an 18-year-old. He is looking good. पर तुम उसको कैसे ट्रीट करते हो, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली क्योंकि जिस तरह से मतलब कर्टिस जोन्स वाला सीन ना हो जाए हम्म, बस। तो तू क्या सोचता दर्द है होता उसमें? है भाई दर्द। हाँ, तो यार उसके अंदर क्या है कि हमने आज एक मीम देखा कि यू रिमेम्बर दैट पेड्री वाला मीम जिसमें कि पेड्री द ब्रेकआउट ईयर ऑफ पेड्री। हाँ, उसके अंदर क्या होता है उसने इतने गेम्स खेले थे उसने एक साल में उतने गेम्स खेले थे जितने नेमार ने पूरे पीएसजी करियर में नहीं खेले थे राइट। हाँ, उसका चेहरा कितना ड्रॉप हो गया था हाँ। राइट। वो आई थिंक स्पेन की जर्सी वाला उसका फोटो है जिसमें उसका चेहरा एकदम गिरा हुआ सा लग रहा है पतला सा एकदम ऐसा सा। सेम चीज आई मैंने मीम देखा था इसमें गया था बाइजेटिच आफ्टर द सीजन व्हेन क्लॉप ओवर यूजेस हिम एंड आई रियली हेट इट पता है आई मीन वी डोंट हैव प्लेयर्स हाँ। एंड व्हाट बाइजेटिच इज और there's a fun fact Bajitic father and Thiago's father played together. Oh really, I didn't know that. Yeah. Bajitic's father played in Celta Vigo and Oh. Bajitic was also in the academy of Celta Vigo. Or coincidentally, Thiago has taken Bajitic under his wing. We all know Thiago is a master. Thiago controls the game. And if someone wants to see what Thiago can do, what he has done since coming to Liverpool, the perfect example is so there's this video of Thiago's masterclass against Manchester United last season, where we thrashed them 5-0. The control Thiago had, even for a person who, for whom that game would have been his first, वो बंदा वो देख के बोल सकता है भाई इस बंदे ने पूरा गेम संभाला था। टैकल्स क्लीन एज फॉर देयर वाज नॉट भाई उसके टैकल्स इतने ज्यादा प्यारे हो रहे हैं ना कि रेफरी चाहता है फाउल देना और नहीं दे सकता क्योंकि वार उसको ओवरटेन कर देगा इतना क्लीन टैकल दे रहा है उस गेम में मतलब उस गेम का तो जो होता है ना कि यार रिस्पेक्ट होती है अब और ज्यादा बढ़ जाती है कि यार यू एक्चुअली सॉ दैट प्लेयर बिकॉज फ्रैंकली बहुत कम लोग देखते हैं बुंडेसलीगा Hmm. Yeah. और थियागो वेंट फ्रॉम बार्सिलोना अ लॉन्ग वे बैक तो जो उसका बेस्ट गेम निकला है जिसके लिए मतलब ये था कि यार थियागो व्हेन वी गॉट थियागो इट वाज भाई यू हैव गॉट अ जेम अंडर ठीक है पता है थोड़ा इंजरी प्रोन है बट वो बंदा इंजरी प्रोन होने के बाद भी जो कर सकता है ना वो नाविगेटा इंजरी फ्री रह के भी नहीं कर सकता था। ठीक है और डोंट गेट मी रॉन्ग नाविगेटा माइट बी अ रियली गुड प्लेयर फॉर एग्जांपल व्हाट टीमो वर्नर We इज would never know what kind of we player would he never is. do We we haven't would seen never him do play in 5 years. I mean I think Liverpool has paid more in medical wages than his salary I think। Exactly. और पता है मतलब बंदा इतना बेशरम है कॉन्ट्रैक्ट उसको नया दे रहे हैं हम लोग दे रहे हैं शर्म हमें भी आनी चाहिए हम भी क्यों? बेशरम है हम ऑफर कर दिए अरे यार। बंदा बोल रहा है मेरे को ज्यादा सैलरी चाहिए मतलब उसके डिमांड्स आ रहे हैं मतलब मैं बोल रहा हूँ तुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑफर हो रहा है तुझे चुपचाप से ले लेना चाहिए।
तू डिमांड क्यों रख रहा है? उसको फुलम ना ले। उसको कोई भी नहीं ले, और पता उसको है उसका फुलम ना ले। वो यहाँ से जाएगा, पता है कहाँ जाएगा? जर्मनी वापस। ऑब्वियसली। वो बिकॉज टीमो वर्नर वाला केस है मैं, उसका। भाई टीमो वर्नर ने बट पहले शो किया था और उसने अभी भी शो कर रहा है। हाँ। टीमो वर्नर लाइप्जिग के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है। हाँ। और यार ठीक है, आई सपोर्ट जर्मनी व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मैचेस। भाई जर्मनी इज रियली अनलकी टू हैव ओनली हिम एज अ स्ट्राइकर। हाँ। लाइक टेक्निकली ओनली हिम एज अ स्ट्राइकर, बिकॉज उसके अलावा कौन है? केविन वॉलैंड है, और वो जो इस बार आया था एक बंदा, आई एम अरे फॉरगेटिंग द नेम। ऐसे कैसे यार? तुम 72 मिलियन चेल्सी स्टार स्ट्राइकर काई हवर्ट्स को तुम ऐसे यार डिसरिस्पेक्ट तो कर रहे हो कि वो ही भाई, स्ट्राइकर है। यार वो बंदा, ही इज द न्यू म्यूलर, अरे यार। ही इज द मतलब म्यूलर 2.0, लाइक ही वांट्स टू बी म्यूलर 2.0। मतलब क्योंकि वो उसका मुझे काम, किस वो मुझे किसकी याद दिलाता है पता है? वो मुझे श्रीसंत की याद दिलाता है, काई हवर्ट्स। श्रीसंत जैसे वो पता है, वो एक वर्ल्ड कप, एक 2007 T20 वर्ल्ड कप पे चल गया था। तो उसी के ऊपर उसने अपनी पूरी करियर बना ली। इस भाई ने एक चैंपियंस लीग गोल के ऊपर अपनी पूरी करियर बनाई है। भाई कुछ देख नहीं यार, कर सकता। बट आई रियली लाइक द पॉइंट ऑफ चेल्सी, बिकॉज फ्रैंकली, who does not like to ban the Chelsea? I mean, they have spent more than 300 million, सिक्स and हंड्रेड yet, मिलियन भाई, इन 2 विंडोज। ये टू विंडोज, तो मैं तो इस विंडो की बात कर रहा हूँ, इस 300 विंडो में मिलियन 300 मिलियन, 2 विंडोज 600। दे हैव स्पेंट एज मच एज द वैल्यू ऑफ फुलम फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब है, नॉट जस्ट लाइक They bought Fulham in transfer market. That is how much they have spent, and they are and behind yet they are Fulham. below film. I mean, at that point, they should have gotten Marco Silva rather than like Graham Potter. यार यार पता ये है ग्रैम ग्रैम पॉटर, पॉटर है, हैरी पॉटर थोड़ी है। तुम क्या कर रहे हो? प्लेयर पे यार प्लेयर मेरे दिलाए को जा रहे हो उससे। मेरे को हैरानी है, मेरे को हैरानी है। ग्रैम पॉटर ब्राइटन में भी था, तो ब्राइटन was good, like they played good football, but they never scored many goals. No, they didn't. तुम चेल्सी में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार वो बहुत गोल कर देंगे? मैनेजर सेम आ रहा है। तुम मतलब एक होता ना जैसे आज के टाइम पे, बिकॉज डिजर्बी का मैंने गेम देखा है, हार्ड हिटिंग, फास्ट पेस्ड, ठीक है, आपका काफी अच्छा अटैकिंग है उसका फुटबॉल। तो अपने को लगता है कि यार ठीक है, बिकॉज आदत हो गई ना क्लॉप का गेम देखने की, तो आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी से रिप्लेस हो हाँ। जो सिमिलर टैक्टिक लेके आए। जो चीज हमारे होते थे 60s 70s 80s के अंदर, जो हमारा बोर्ड रूम होता था, बूट रूम जो था हमारा, बूट रूम में क्या होता था? शैंकली, पेजली, इस तरह से रहता था हमारा, राइट? तो आप ये चाहते हो कि हाँ क्लॉप के बाद, फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक पेप लिंडर्स, बिकॉज frankly there is a big faction who says कि भाई पेप लिंडर्स should become or might become the next manager, and Pep Linders has himself said कि after like his partnership with Klopp ends, as in मान लो Klopp retire हो गया, because his plan is either to go into German coaching or retiring. अगर वो चीज हो रही है तो then Pep Linders won't go under someone, he will start coaching by his own. Here is where I disagree. Pep Linders. Why do I know the name of your assistant manager? Do you know the name of any other assistant manager in the Premier League apart from Pep Linders? Arteta बके was, जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है। उसको बोल भाई, तू कोचिंग पे फोकस कर। बुक पे बुक आए जा रही है, बुक पे तुम्हारी उतनी अवे विंस नहीं है जितनी तुम्हारी बुक्स आ चुकी है। क्या हो एक रहा बुक आई है भाई, एक बुक आई है, इंटेंसिटी, है? ठीक है। आई मीन आई थिंक दैट लिंडर्स वाज की द बात नहीं वन थिंग, कर। उस बंदे ने बुक लिख दी और हमारे गेम से चली गई। अब वो नहीं बोलते आप किसी चीज की बड़ाई कर देते हो और नजर लग जाती है, वो चीज हो गई हमारी, हमने इंटेंसिटी लिख दी और उसके बाद से इंटेंसिटी चली गई। इंटेंसिटी चली गई। तो कमिंग लाइक बैक आई टू एम नॉट, चेल्सी। कमिंग बैक टू जस्ट चेल्सी। मैं सिर्फ लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट Chelsea has been doing since they sacked Tuchel. frankly it was a So really shitty decision for me. exactly, exactly, it was a very shitty decision. But you sacked him. You brought in Potter. You said that this is going to be a long-term plan. You gave him a $12 million, £12 million per year contract for 5 years.
a 60 million contract, one of the most expensive contracts in the history of managers. 22 million you paid out to Brighton for him. That's effectively 82 million. जी एग्जैक्टली 82 मिलियन। और पता है उसकी ब्राइटन में क्या सैलरी? 1.75 मिलियन। यू आर पेइंग हिम 12 मिलियन। बीच में तो The आओ। long con. The long con. ऑब्वियसली बंदा सब छोड़ के आ गया यार। तुमने उसकी सैलरी 600% से बढ़ा दी। वो क्या करे, इतनी इतनी इंक्रीमेंट। और ऊपर से व्हेन ही केम, पीपल स्टार्टेड इंस्टेंटली कंपेयरिंग विद आर्टेटा कि अरे आर्टेटा जैसा प्रोजेक्ट है, आर्टेटा को टाइम दिया था, इसको भी टाइम दो। आर्टेटा 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 के साथ कंटिन्यूस उसकी कंपैरिजन। These guys who are comparing Potter with Arteta have lost their mind. They don't remember what Arteta did. Arteta in his first season, even though we had way worse squad than Chelsea, हमारे डिफेंस में मुस्ताफी खेल रहा था। ओके, हमारे डिफेंस में थियागो सिल्वा नहीं था, हाँ, a legend of the game। डेविड लुइस था तुम्हारे पास, ठीक है? दैट डेविड गाय लुइस भी कैन बाद स्कोर में, फ्री हाँ किक्स। डेविड लुइस था, पर वही तो डेविड लुइस और मुस्ताफी थे हमारे डिफेंस में, डम एंड वो भूल डम्बर। गया भाई तू। बॉस्निया बॉस्निया गए। कोलासिनाच हमारे लेफ्ट बैक था, कोलासिनच। राइट बैक बेलेरिन था, और मिडिल हेक्टर में बेरिन, ओजिल हाँ। खेल रहा। ऐसी तो टीम एंड थी। दैट वाजंट प्राइम ओजिल, दैट्स द पॉइंट। वॉश्ड अप ओजिल, खत्म हो चुका हुआ ओजिल था। और ऊपर से हमारे पास जो मेरे ख्याल से उस वक्त अटैक में भी लाकाजेट था, सेंटर लाकाजेट फॉरवर्ड। था। लाकाजेट था, वो आ गया ओबामियंग था था, क्या? पेपे आ गया था। पेपे पेपे था तब, पेपे था। तो पेपे था फॉरवर्ड ना। लाइन सब बोल रहे थे काफी अच्छी थी, पर उस फॉरवर्ड लाइन में पैशन जीरो। नो पैशन, नो पैशन, नो अवेयरनेस, सब वन ट्रिक पोनी, तीनों के तीनों। तो देयर वाज नो पैशन, देयर वाज नो अग्रेशन। अग्रेशन, देयर वाज नो विजन। ऐसी टीम थी हमारी। और उसके अंदर व्हाट आर्टेटा डिड व्हेन ही केम आर्टेटा फर्स्ट गॉट वाज यू द एफए कप, राइट? he won the FA Cup, but effectively, before we started this free flowing football, Arteta literally parked the bus. He decided to grind out wins, to build the belief, to build। उसने देखा कि टीम के अंदर आदत ही नहीं है ऑफ विनिंग द गेम्स। जीतना ही नहीं हो रहा ना। जीतना ही नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने पहले पूरी टीम को पार्क कर दिया पीछे, और सिखाया कि कैसे जीता जाता है। और फिर इसीलिए हम लोग उस सीजन में, पीपल से ओ यू फिनिश्ड एट, यू फिनिश्ड एट, वी वर 11th व्हेन एमरी लेफ्ट। We went to the eighth position after grinding out results like this. We won the FA Cup. Next season we started playing our football, और उसमें होने ही वाली थी, उसमें इश्यूज होने वाले थे, दैट्स व्हाई वी फिनिश्ड एट। और उसके पता बाद है, उसका उसकी आई एम नॉट उसका सेइंग, इम्पैक्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आर्टेटा शुड बी प्रेज्ड आउटराइट, ठीक है? आर्टेटा was lucky as well. Had he gone got an owner like Roman Abramovich, he would have sacked after the first year. एब्सोल्युटली। ठीक है? And there have been, like, I think 60 or 70% of the Arsenal fan faction, they wanted Arteta to be out. आई नो, आई रिमेम्बर। आज जो उसके चरण धो धो के पी रहे हैं, वो सारे बोल रहे थे कि आर्टेटा आउट। मैं आर्सेनल फैन नहीं हूँ, मेरे को लगा ठीक है भाई। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी विद यू नॉट विनिंग बिकॉज वी वर विनिंग। एग्जैक्टली राइट। तो मैं क्यों चाहूंगा कि आर्टेटा जाए? मैं तो चाहता हूँ आर्टेटा रहे। हमारे पास एक इजी विन आ रही है। और इट वाज गुड टू सी आर्सेनल विनिंग, नॉट बिकॉज आई लाइक आर्सेनल बट बिकॉज ऑफ द फुटबॉल दे आर प्लेइंग। या, आई वांट आर्सेनल टू लूज, बट आई वांट टू सी देम प्ले फुटबॉल। द इंस्टीट्यूशन नीड्स दिस। द क्लब एज एन इंस्टीट्यूशन needs what Arteta is doing. We need, but yeah, we are getting I think sidetracked. We're going I into think us. the best, so I'm really sorry, but I think the best move, or the best, the harshest call a manager can take is, saying no to no, you are not the captain. Like when he sacked Aubameyang, Exactly. Yeah. that was good, and I think that should be the disciplinary belief every team or every manager has to take. I mean, no, like I'm not a manager, but when Steven Gerrard said that, like, no, Minks, you're not the captain, Megan is, because Megan was performing better.
what that did was Mings started playing better. Mings is too. Mings plays really well. But then Mings makes one mistake, and every mistake he does leads to one goal. Exactly. He does not commit mistakes, he only commits goals. Yeah. I think that's what Mings' career has been, chewing gum and making mistakes, Yeah. And leading stomping to on goal. people's faces. That, yeah, कभी कभी हो जाता है. Yeah, that is true. What did you think about the Arsenal performance? It was good. I mean, I'll be like, I only saw the first half, and it was slow. I think. I mean, I was not able to see the second half, but it was good. I wrote some like couple of things, and I mean, what I saw was there were things which like could have been better. As in, I think I'll come to the Aston Villa part as well as the Arsenal part. Okay, Yeah, so the best thing what Aston Villa was doing, Emi Buendia, over the class he showed. Emi Buendia was carrying. I saw like I think it was a second goal. The whole mid is open. exactly. Emi Buendia took the ball from the first third, took it to the final third without any problem. There was no person to stop him. And I was like, भाई क्या हो रहा है? एक बंदा अटेम्प्ट करे, थोड़ा उसको स्टेप ओवर लेने दे, कुछ तो करे. मतलब अर्जेंटीना का है, थोड़ा लगे तो सही कि वो अर्जेंटीना का है. तुम खाली तो भागने दोगे, खाली तो कोई भी भाग लेगा. नहीं, बात वही सही। बात है. तो पर एमी बुएंडिया वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट टाइम. अब मैटी कैश ने इतना, मतलब वो टीम आपकी 1-0 अप से वन खाई थी, गोल खाई थी. इट वाज अ बेल्टर ऑफ अ गोल दो. साका इज अ ब्यूटी, इट्स अ जेम. You guys should lock him on a 10 years this thing. हु साका। Bukayo Saka. Saka, not ओ Jaka. राइट, ओ हाँ। साका। ठीक है. साका को तुम 10 साल रख लो. एफएफपी आने वाला है अगले साल से, तुम लोग नहीं कर पाओगे उसके बाद. उसको एग्जैक्टली। 10 साल के लिए रख लो. मैं एक। और किसी प्लेयर के लिए नहीं बोलूंगा. मार्टिनेली, ट्रोसार्ड, तुम्हारे लेफ्ट विंग के तो कितने बंदे खिला लो, नहीं. साका कैन डू व्हाट नो अदर प्लेयर कैन. मतलब उस बंदे के लिए कोई बुरा सोच ही नहीं सकता यार आदमी. यार, मुस्कुराता रहता है. जस्ट गोइंग बैक टू दैट बुएंडिया को, यही डिफरेंस है बिटवीन हैविंग जॉर्जिनियो एंड हैविंग पार्टी। जब जॉर्जिनियो खेलता है, आई एम नॉट पुटिंग अ शेड ऑन जॉर्जिनियो। जब जॉर्जिनियो खेलता है तब वी हैव सीन इन द पास्ट, अभी इस गेम में और पिछली गेम में, वो जब हम लोग अटैक में होते हैं तब ही इज अमेजिंग। बिकॉज जैसे ही, मतलब जैसे भी कोई अटैकर फंसता है, वो बॉल जॉर्जिनियो के पास आता है, वो रिपर्पस कर लेता है। जॉर्जिनियो कोई भी अटैक को कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन रखता है। पर जैसे ही ऑपोजिशन ब्रेक करती है, जॉर्जिनियो के पास वो पेस नहीं है कि वो अपोजिशन नहीं. के रनर को ट्रैक I कर think सके, जो yeah, पार्टी करता I also like saw that you cannot have Zaka and Jorginho at the same time at the same है। स्लो, midfield. स्लो। They are very slow. Odegaard अकेला कितना करेगा? एग्जैक्टली। And especially when you are having like, if you are like being like 4-3-3, then ठीक है, उसमें दो ऑप्शन है. अगर तुम ओडेगार्ड को आगे खिला रहे हो, ठीक है, तुम क्या करोगे? दो इसको काइंड ऑफ अ डबल पिवट बोल लो या तुम कैसे भी बोल लो, बट ये दोनों पीछे रहेंगे. तुम भाग ही नहीं सकते. देयर आर नो अगर रनर्स। तुम अगर तुम्हारी किस्मत खराब है, नूनेज, राशफोर्ड, ऐसे बंदे मिल गए तो चांस ही नहीं है भाई. डिफेंडर ऐसे हो जाएंगे कि भाई तूफान आ रहा है हमारे सामने. एग्जैक्टली। मोड्रिक, भाई मोड्रिक है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है, ही इज क्लोज टू 007. पीपी, बट रोड रनर। बट बंदा है, उसे भागना आता है. I was like, I was ashamed at what Chelsea fan were doing. मतलब भाई वो बोल रहे अरे यार मिलनर को भाई मिलनर 37 का है, ठीक है. मिलर मतलब मिलर के साथ हार्वी एलियट जब पैदा हुआ था, तब से मिलनर खेल रहा है प्रीमियर मिलनर लीग। का करियर है इज मोर देन व्हाट हार्वी एलियट्स एज इज. मतलब भाई मतलब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? ठीक है, फिर भी भाई तो कुछ नहीं है. मिलनर के जो दो टैकल्स थे, लगातार जो दो टैकल्स दिए उसने कल,
मैच के एंड में मैं था भाई यार तू मिलनर, तू एक क्या, तू 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ले, बस वो हर 3 मैच में मेरे को ये दिखा दे। वो मैं 100 रुपए रोज चढ़ाऊंगा। वो जब मैंने देखा ना, तब वो मुझे वही फीलिंग आ रही थी, तुझे याद हो तो। मैं भूल गया कौन सी मैच में था, कौन सा पाकिस्तान का बॉलर था, डेब्यू कर रहा था और उसने आशीष नेहरा की विकेट ली, सेलिब्रेट। भाई आशीष नेहरा है वो, ये जेम्स मिलर है, तू उसके क्या, जाका उससे ज्यादा फास्ट। हाँ, क्या होगा अब। जेम्स मिलर से और तुम। तो जेम्स मिलर इज इन फॉर द लॉन्ग हॉल, ठीक है वो बंदा कंसिस्टेंट है, बट वो हाँ, पेस ही नहीं है। नहीं। 37 साल का आदमी पेस थोड़ी देगा। यही वाली बात है, जाका और जॉर्जिनियो के साथ हम पेस का गेम नहीं खेल सकते। आई वॉज रियली लाइक, मैं ये सवाल है लाइक आई वांट टू आस्क यू, व्हाई इज एमिल स्मिथ रो नॉट प्लेइंग मोर मैचेस? ही इज इंजर्ड। इज ही इंजर्ड? लाइक ही बट इज ही वाज बिन ऑन द बेंच, बट ही वाज ऑन द बेंच लाइक लास्ट नाइट एज वेल, उससे पहले वाली आई थिंक मैच के अंदर भी बेंच पे था। उसका प्रॉब्लम यही है कि सीजन शुरू हुई तब वो इंजर्ड हुआ, फिर वो वो अभी रिकवर हुआ इन लाइक 6 मंथ्स अगो, मतलब 6 मंथ्स आफ्टर ही स्टार्टेड रिकवरिंग, उसको बेंच पे लाया गया, देन ही गॉट इंजर्ड अगेन इन रिहेबिलिटेशन। वो बंदे का आर्थर वो मेलो बंदे है क्या? अरे यार, उसकी हैमस्ट्रिंग मुझे लगता है कि वो उसकी पास्ता की बनी हुई है। मतलब क्या वो क्या कर रहा है, मतलब इस बहुत वीक है वो इंसान। वो उसको इतना इंजरी प्रोन है कि हम उसको इस तरह से कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, मतलब। बिकॉज एमिल स्मिथ रो, भाई इस बंदे के पास पेस थी, अच्छे से बॉल लेके जा रहा था, बॉल कैरिंग एबिलिटी बहुत प्यारी थी उसकी। मैं लास्ट लास्ट एक में मैचेस देखे हैं। मैं एकदम से गायब कि भाई अब एमिल स्मिथ रो नाम नहीं ले रहे। मार्टिनेली हैज बीन देयर, साका हैज बीन देयर, तुम्हारे नए ओडेगार्ड, ये तीन मतलब ये 4 जन थे तुम्हारे पास। मार्टिनेली, ओडेगार्ड, स्मिथ रो, साका। साका गायब, वो गायब हो गया स्मिथ रो। I think Arteta values, like Arteta has said this in a press conference before as well, that the best ability is reliability. उसको ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो वीक इन वीक आउट उसके लिए खेल सके। दिस इज व्हाई यू सी इंजरी प्रोन प्लेयर्स लाइक टियरनी साइडलाइन, टियरनी को साइडलाइन उसने कर दी, एमिल स्मिथ रो हैज बीन साइडलाइन, और ऐसे टिerney आई प्लेयर्स थिंक के। बिकेम योर वाइस कैप्टन एज वेल राइट एक टाइम पे। टियरनी, हाँ, टियरनी was every Arsenal fan including me wanted Tierney to be the captain this season, or he went with Odegaard. Now this shows that he knows more than us. हम सब, each and every Arsenal fan has been proven wrong by Mikel Arteta on something or the other. Like I was angry when we signed Jorginho, and yes, Jorginho के साथ हम थोड़े weak हैं defensively, but look at the ball control he has, the level of, और उसने जो passes play किए हैं in behind, he is majestic. मतलब हम नहीं जानते, मतलब हम वी आर ऑल इडियट्स। मतलब उसने जब जिंचेंको को साइन किया, हम लोग सोच रहे थे कि ये टियरनी का बैकअप होगा, टियरनी उसका बैकअप हो गया। जिनचेंको लेफ्ट बैक कहाँ खेलता है, तो लेफ्ट मिडफील्डर खेलता है। वो टक इन करता रहता है, और वही तो वो प्रॉब्लम है। आगे ही खेलता है, वो पीछे ही नहीं खेलता। और प्रॉब्लम ये है, अगर कोई पीछे आ जाए तो वो जब तक आएगा उसको सपोर्ट करने के लिए और कोई है नहीं। हाँ, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस गैब्रियल मगेलेस इज अकेला, because you cannot rely on your defensive midfielders till Partey doesn't come. एग्जैक्टली। They are too slow. Zinchenko is too far up the pitch, because what is happening is लास्ट मैच में देखा ट्रोसार्ड आ गया, जिनचेंको आ गया। हमारे यहाँ क्या होता है, रॉबर्टसन हैज पेस, सिमिकास हैज पेस, तो दोनों के दोनों अगर उनको आना होता है तो आ जाते हैं, वो भागते हुए आ जाते हैं। नॉट ओनली दैट, नूनेज हैज बीन गिविंग डिफेंसिव कवर एज वेल, हाँ, because during like since the past couple of matches, I think that has like, I mean, everyone knows Klopp knows more than you can say 99% of football fans. I mean, it's fucking Jurgen Klopp. And Jurgen Klopp knew
that yes, Nunes and Cody Gakpo, are they both can play the left wing as well, and they both can play the center as well. So what he did was खुली छूट, तुम दोनों fluid हो जाओ, because you cannot expect the same goal which happened during the Everton match without Darwin Nunes. Had it been Cody Gakpo, he could have been like, he is fast. I mean, मैं हैरान था because उसके आने से पहले you get that all क्या बोलते हैं उसके stats and all that. कोडी गाक्पो को इसमें सबने ये नहीं बोलता he is good, like he has decent pace, but he is not fast. But I saw he is fast. He's not Darwin Nunes fast. He might not be Rashford fast, but he is fast. You cannot say कि वो fast नहीं है. यार हर आदमी हालैंड थोड़ी होगा. बट मैं देखा है भाई वो बंदा कर सकता है, इतना फास्ट है, प्लस ही कैरीज द बॉल इज वेल. और टक इन करके वो तो चलो उसकी नेचुरल एबिलिटी है. एंड 2 goals 2 matches, गुड गेम, गुड गुड मैच रीडिंग इज वेल. साला ने जो उसको पास दिया था लास्ट मैच में, अगर आपकी थोड़ी बहुत नहीं बन रही, अगर आपके टीममेट से आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते कि ये आपका गेम चल रहा है. बायजेटिच, आई वांट टू कम बैक टू दैट प्लेयर. वो उसको पास दिया था वैन डाइक ने, वैन डाइक से वो आगे ले गया टिल द एज ऑफ द फाइनल थर्ड. रोकने के लिए कोई है ही नहीं, प्लेयर ही नहीं. मैं था तुम क्या, मैं न्यूकासल से मतलब आई हैव दिस मेजर क्वेश्चन, आर यू टू डिपेंडेंट ऑन ब्रूनो गोमेरेश? When the They player are is not playing and you are keeping the midfield away. they are they are extremely dependent on. जब जब ब्रूनो नहीं खेलता है उनकी गेम डिफेंसिवली बहुत सफर करती है, It's क्योंकि a दे हैव टू good कमिट टू मेनी प्लेयर्स इन द डिफेंस. जो वो ब्रूनो होता है तब वो क्या होता है कि एक पिवट है, दे स्लाइड इनटू काउंटर अटैक प्रीटी क्विकली. तुम्हारे सामने वो खेल रहे थे तब दिख रहा था कि जो फाइनल जो जो वो जो ट्रांजिशनल बॉल है उसमें वो उसकी एक्यूरेसी ही नहीं. और Hmm. जब एक्यूरेट बॉल आता भी था तो वो बॉल जाता था सैन मैक्सिमन को. अब सैन मैक्सिमन मुझे लगता है कि उसको एनएफएल में खेलना चाहिए. वो भाई बॉल लेके बस भागता है, उसको फाइनल थर्ड का कुछ अंदाजा नहीं कि वहां जाके क्या करना है उसे, वो सेंट टच डाउन हो मैक्सिमन जाता है की, उसका. पता है सेंट मैक्सिमन के साथ आप एक प्लेयर है जिसको आप, लाइक दीज टू आर सेम, लाइक दे आर एग्जैक्टली सेम. एलन सेंट मैक्सिमन एंड आडमा ट्रावर, भागना जानते हैं, ये नहीं पता गोल कैसे होता है. नहीं होता. और मुस्टंडे है मतलब दोनों. आप ये देखो, आप एलन सेंट मैक्सिमन जाएगा लेफ्ट विंग से, आपका एज ऑफ द बॉक्स से दूसरे एज ऑफ द बॉक्स, वो वापस आ जाएगा. मैं था शूट कब लेगा तू? मैं बोल रहा हूँ साला आगे खड़ा है, बाकी 10 बंदे आगे आ चुके हैं. तेरे को शूट लेना था तू पहले लेता, डिफ्लेक्ट हो जाता. अभी तो डिफ्लेक्ट होके भी दूसरे प्लेयर के पास जाएगा. सीधी बात है. गोल के आगे खड़े हैं 10 बंदे, यार तू कहाँ से गोल करेगा? और गोल के आगे एलिसन खड़ा है, वो वैसे ही नहीं होते तेरे से वैसे गोल. नो बडी कैन से कि एलिसन ने भैया बचाया नहीं हमारा सीजन. एलिसन हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर लिवरपूल दिस सीजन. वो तो एलिसन प्लेज बेटर फॉर लिवरपूल दैन फॉर ब्राजील. एलिसन इज नॉट द बेस्ट पेनल्टी सेवर, नहीं. ही इज नॉट. बट वो बंदा ओपन प्ले में तुम उसको आगे जाके बताओ, बहुत मुश्किल है भाई, वो 1-on-1 में उससे बेटर नहीं है. कैलम विल्सन, उससे गोल बचाया. उससे एल्मिरॉन से कल गोल बचाया. सेंट मैक्सिमन से गोल बचाया, 3 से बचाया उसने. और 3 से, लाइक, इट वाज इनफ टू मेक, लाइक, गिव हिम द मैच बॉल. ये वाली बात है ना, आप यू कैन नॉट हैव, अब मिडफील्ड में आप एक बंदे को, हमारा क्या था, वी वर टू डिपेंडेंट फॉर फबीनियो. हाँ. बायजेटिच आया, भाई उस बंदे के आने से फबीनियो का गेम इंप्रूव हुआ हाँ. है, रेडिकली इंप्रूव नहीं हुआ है. कॉन्फिडेंस नहीं है बंदे के अंदर. हमारी टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही. मैं आई एम नॉट सेइंग वी वन अगेंस्ट न्यूकासल, लेकिन ना, इन अ वेरी साउंड मैनर, वी ग्राउंड आउट टू विन. बट प्रॉब्लम क्या रही, वी गेव देम टू मेनी चांसेस. बट ये अच्छी बात थी, दे वर 10 men and they lost Nick Pope as well. Plus we were two like 2 गोल से आगे थे हम लोग, कहाँ पे, जब उनका 10-11 बंदे थे. तो वो हमेशा इस प्रेशर में रहे कि भाई अब तो 10 लोग हैं, वी हैव टू डू मोर डिफेंसिवली. तो उनका गेम प्योरली काउंटर अटैक और लॉन्ग बॉल पे आ गया, कि अगर हम लॉन्ग बॉल नहीं फेंकेंगे या सैंड मैक्समैन को पास नहीं जाएगा, हम कर नहीं जाएंगे गोल. उनका चांस ही नहीं था. और सेंट मैक्समैन, जैसे आपने बोला, इधर उधर भगा लो, गोल नहीं आना उनसे. हुआ भी यही.
एक फाइनल टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उस चीज पे हम लोगों ने अभी तक टच नहीं किया, और वो है टकला। टकला टकले पे हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की है। जो टकला पगलाया हुआ है, पेप ग्वार्डियोला। क्या चल रहा है बे उसके दिमाग में? मतलब क्या हो, क्या गया है? मतलब मिड लाइफ क्राइसिस आ गई है क्या उसकी? क्या मतलब, I यू think the हैव, problem, I think the allegations on Man City has have had a profound effect on Guardiola as a whole. आई एक्चुअली, मैं उसी पे आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अ वे ग्वार्डियोला ट्राइड टू वेपनाइज दैट। Hmm. Guardiola tried to weaponize the fact that they are cheating scumbags to motivate his own team that, oh देखो सब लोग कैसे, he's saying, oh I will be here, I will be here, no matter what I will be here. You But won't be. I had बार्सिलोना आएगा तो genuine चला जाएगा। respect for that guy. I had genuine respect for that guy till he said shit about Steven Gerrard. Steven Gerrard slipped, it's not my fault. भाई तो वो बंदा उस बंदे ने कभी तेरे को बोला नहीं कि भाई तेरी गलती है. हाँ। But the fact is you cooked your books. और रिजल्ट ये रहा है कि तुम लोग ज्यादा भाई, तुम लोगों ने इतनी घटिया काम किए हैं ना लाइफ में. और अरे उसके बाद यार, तो आके ये नहीं बोल सकते. 90 मिलियन, 90 मिलियन पाउंड्स की उन्हें जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है, दैट इज एसोसिएटेड विथ एन एड्रेस जहां पे सिर्फ एक मेल बॉक्स है। एक मेल बॉक्स तुम्हें कहां से 90 मिलियन दे रहा है? किस तरह से वो तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा है? और Add यू 10 हैव mil, द add 10 गॉल। million to that and you get Jack Grealish. So I think that's a bad investment. एक वो मेल बॉक्स को ही ले आता, दैट वुड हैव डन बेटर देन जैक ग्रिलिश। मैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए जैक ग्रिलिश के खिलाफ कि द वुंड्स आर स्टिल फ्रेश, पर बट अ, ठीक है भाई, ले, देख अगर तुम, भाई उस बंदे के कितने हैं, उसका मैक्स टू मैक्स 15 गोल कंट्रीब्यूशन हो हाँ 2 साल में. 15 गोल कंट्रीब्यूशन फॉर 100 million pound signing, not हाँ euros but pound signing. Fucking Darwin Nunez is producing better numbers than that, एग्जैक्टली। and he has been said as the worst signing under Klopp as well. People have hailed him like इससे घटिया प्लेयर नहीं साइन किया, इसको शूट मारना नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, इसको गेम बनाना नहीं आता, इसको सिर्फ भागना आता है. नॉट सेइंग डार्विन नूनेज हैज लिव्ड अप टू द पोटेंशियल, बट एटलीस्ट ही इज रॉ. हाँ ही इज 20. This is his first time he's playing in the Premier League. He himself has said कि Premier League is not easy. Premier League is too fast. But at least the guy is also fast. ग्रीलिश नहीं, का काम क्या है? ग्रीलिश का काम क्या है? उसे पता है ये चीज. ही इज देयर टू विन फाउल्स. उसे पता है, उसे एक चीज अच्छी आती है, उसे स्टेप ओवर्स करने आते हैं, उसे कोट एंड कोट ड्रिबलिंग करनी आती है. उसका भी वही सीन है सैंड मैक्सिमम वाला। तो यार्ड्स रशिंग बहुत करता है कि मतलब भागो 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 भागो। और एक बात बताऊं, इफ डार्विन न्यूनेस वाज इंग्लिश, or if Jack Grealish wasn't English, you would have seen the real comparison. ट्रू ट्रू. जैक ग्रीलिश को जितनी फ्रीडम मिलती है, जैक ग्रीलिश, जेडन सांचो, इन सबको जो जो इंग्लिश मीडिया जो ढील दे चुका है, वो ढील वो एंथनी को नहीं देते। वही ढील उन्होंने ना डार्विन न्यूनेस को दी, और ना ही वो लोग वो ढील, इवन अगर हालैंड 4 गेम में गोल नहीं करता, वो उसके ऊपर भी बोलने लगे। Haaland finished. Motherfucker, he has scored more than what the past four like golden ball winners have. एग्जैक्टली। फिनिश क्या होता है इसमें? आई एम गोइंग नॉट बैक। सेइंग कि वो बंदा, यार बंदा बहुत ठीक है. मैं क्या, every person commenting which is from the outside of city periphery will say that he's a Norwegian robot हाँ, because he knows one thing, but he's good at one thing. पेस है, शूट लेना आता है, एक्यूरेट है, बस. बट उसकी द डेंजरस पार्ट इज दैट उसकी गेम अब इम्प्रूव हो, जो पेप वो कुछ भी ग्वार्डियोला हो. सिस्टम में जो उसकी गेम है। क्योंकि वो मैंने आर्सेनल के खिलाफ देखा, ही वाज, ही Guard, टुक द बॉल ऑन द Guardiola विंग। Guardiola creates, like he's a, like Guardiola creates a system. You like वो बंदा क्या है, Guardiola क्या है ना, he's a master sculptor.
उसको आप रॉ पर्सन दे दो, वो ऐसा स्कल्पचर बना के देगा, बट वो चीज ऐसा है कि वो स्कल्पचर सिर्फ उसी के सिस्टम में फिट हो सकता हाँ है। ही विल क्रिएट सच अ नट एंड बोल्ट विच विल ओनली फिट हिज मशीन, अदरवाइज वो आप बाहर जाओगे, आप उसके प्लेयर्स फेल हुए कितना तो। एग्जैक्टली। आई हेट रैशफोर्ड भाई। बट यार you hate him, but आई look at the form he's in. आई एज अ लिवरपूल प्लेयर, आई मीन, आई वांट him to get injured, but I just can't say that because he's playing good football. I mean, भाई क्या क्या है उसका, 2 गोल आज मार दिए। और हम उसको जेडन सांचो की बात करते हैं, आज फिर गोल मार दिया, आज फिर तो क्या, आज गोल मार दिया उसने। फिर तो नहीं कह सकते उसके लिए, बट आज गोल कर दिया उसने। एक एक मुझे याद है, और ये जो सारे यूनाइटेड फैन कूद कूद रहे हैं ना कि ओ रैशफोर्ड, ओ रैशफोर्ड, 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 यही सब थे जो पिछले साल कह रहे थे कि सेल रैशफोर्ड टू टू आर्सेनल, जब आर्सेनल के साथ लिंक थी इस समर में। सब बोल रहे थे ओ सेल रैशफोर्ड टू आर्सेनल, सेल रैशफोर्ड टू आर्सेनल, क्योंकि वो खराब खेल रहा था मेरी पिछली माँ सीजन। कहती है बाल कलर नहीं कराने चाहिए। रैशफोर्ड के दोबारा काले हुए, गोल कर रहा है। पिछले साल ब्लॉन्ड करा रखे थे, गोल हो ही नहीं रहे थे। वो आई एम उसका टेलिंग यू, इंडियन मदर्स नो द, know how to good do get stuff done. और एक बात बताऊं, लाइक वन थिंग दैट वी कैन ऑल एग्री ऑन इज दैट यूनाइटेड फैंस आर, like no matter what you think about Arsenal fans, we've suffered a lot. With United fans, it's like they are the most toxic and the most shameless fan base in the whole world. उनके जितना shameless कोई नहीं है। पिछले साल तक बोल रहे थे कि अरे रैशफोर्ड को निकालो, रैशफोर्ड को निकालो, आज खेल रहा है ओ रैशफोर्ड बैलून डोर। इतने You know what? shameless हो यार। I mean, like full credit to what Sir Alex did. Sir Alex is a one of the best managers to ever been born, right? Because of Sir Alex, I think United fans are too spoiled, Yeah, and they cannot have, you know, भाई ट्रॉफी नहीं जीती तो हम नहीं, हम अच्छा नहीं खेल। I'm not saying Ole was a good manager, but Ole got his second। ठीक है, तो घटिया मैनेजर के साथ सेकंड आए हो ना। because your और team, that team was so, yeah. This thing I will not let Man United fans forget this. Last year when they bought Ronaldo, or the year before when they bought Ronaldo and Varane, that was last year, right? Last year, last summer. लास्ट समर वरान गेम एंड रोनाल्डो केम, Yeah, Varane and Ronaldo. They were literally like, we are going to challenge for the title. That is what they said. The quadruple is on. That is what they were saying last summer. 3 months later, they were like, we need to finish in the top four. 2 months later, they were like, oh, our season is finished. Then this season, start of this season, we were like, oh, top four is our target. Top four is our target. Then they go and beat Man City, and they're like, oh no, we are in the title race. Arsenal beats them. No, no, again we are in top four. इतना shameless fan base है यार। मतलब आ- और this is one thing you as a Liverpool fan and I as an Arsenal fan have in common. We both know more Man United fans than we know Spurs or Everton fans because they are I little don't think clubs. I don't think India has Everton fans. I don't think I India don't think has Spurs fans either. I know Spurs fans. I know, like I have seen people saying that yes, because I mean, to be frank, Tottenham comes under the Big Six umbrella, right? Now, I historically, think Everton that's are more successful than Tottenham. history is for losers. तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? Then That's why history is for Tottenham and Everton both. okay. But yeah, I mean, to be honest, like Rashford is playing gem of a matches. Like his performance are like, and he's not just playing well; he's playing consistently well. उसकी पूरी Uh, उसका पूरा माइंडसेट बदल लिया है टेन हाग When Eric Ten Hag came, I read today only. When Eric Ten Hag came, he told to like he said that to Rashford, "I want to see you smile again." If that's not a sentence, what a
player wants to hear from his manager. I don't know what is. Exactly. And That shows that that person knows how to manage as well. exactly. Or I am to be I'm honest, and to be honest, I was skeptical at like whether Erik ten Hag would be successful at United or not. And it's too early to say that as well. Because frankly, he came from like Eredivisie, but he has done a damn good job till now. I mean, technically, he is still in the like race for the title, and I mean, they might win the Carabao Cup. Yes, it's a really small cup, but it's a start. I think they like if I'm being honest, begrudgingly I have to say that it's a three-horse race. It's not a two-horse race because Man United are just 3 points behind Man City, just three. Exactly. So that's and Man City are 2 points behind us. So it's a 5 point difference between first and third, and then there is an 8 point difference till fourth. So it is And a you know three what? horse. Mm. That's the same different. That's a similar difference. I mean, Liverpool is at eighth right now. Newcastle is at fourth, and we have a difference of 6 points. Before this week, it was a difference of 12 points. 12 points. Newcastle lost two matches on the trot. Liverpool won two matches on the trot. So now the difference is only 6 points. And frankly, I think of what we did 2 years before, We will do that. if we can get like a couple of more movements like what Allison's header was against West Brom, I think we can get into top four. I I'll be very happy if Liverpool gets into top four. I think Liverpool will get into top four because Newcastle are declining. टॉटनम का तो अल्लाह ही I'm मालिक है. still skeptical. I'm still skeptical, but I haven't lost hope. हाँ. नहीं, but I'm not skeptical. I think I think Liverpool will make it into top four because Like your biggest hurdle is not going to be Newcastle or Tottenham. it's Newcastle going to has be dropped off, or our biggest rivals are Fulham, Brentford, Brentford and Brighton. and Brighton. Sorry, not Brighton. Brighton. Brighton are playing amazingly well. So, but Mm. they have that bozo But moment. you know what? I read about De Zerbi. As good a manager he is similar to what Conte is. He is there to get you short. He's a short-term success manager. You cannot see your club playing for the long haul. Potter was there for quite some time. I don't think De Zerbi would be because they are too egotistical as managers. They want new players. They want money to be spent. And frankly, I don't think Dan Levy has not spent when it comes to Tottenham. He has spent. Dan Levy. Tottenham. Oh, okay. I went to Brighton. Okay, मेरा See, दिमाग because Brighton में था. what Antonio Conte हाँ, I mean, similarly, I don't like. Frankly, Brighton is a much smaller club. yeah, So way small. De Zerbi, so De Zerbi might not get that big of players. And there was this one post, I'm forgetting who wrote that. They said because Caicedo is 70 million. Okay. Arsenal wants him. Liverpool wants him. Like these two clubs have shown their interests. If Chelsea wants him, then he's going to Chelsea. Nobody can deny that. Until the player himself says no. Yeah, Because money won't be an issue for Todd Bowley. Liverpool cannot afford him at 70 million. And frankly, I don't think he's a player for 70 million. He's like Brighton will be just milking the cow. but yeah. So let's run through the next week's fixtures. What we will Sure, do sure, sure. is, what we will do is, we will play a little prediction league Game or and something. Yeah. a little prediction league. The Red So Side Prediction League. We'll have a PL of our own sort. yellow horror. What we will do is you will predict the results of the games. If we get the draw, if we get the result right, we'll get 1 point. If we get the score right, we'll get 3 points. Oh, Okay, sure. for each and every fixture. Okay. And at the end of every week, let's have a forfeit. Sure. The other can decide what the forfeit is going to be. I can ask you to wear a Man City shirt. Like I can go that far. What I can do is
I can shut off my camera for the day. Okay. Okay, so let's run through these fixtures. Fulham Wolves. What do you think? Fulham Wolves. I think Fulham wins because Fulham is playing well at the moment. Like Marco Silva has done a fantastic job, and the fact is, it's a home game for them. It's not a Wolves. Fulham, I think they can do well, and Wolves hasn't been the best defensive this season. I mean, Tottenham has been worst, but Fulham hasn't been the best as well. So I can see them grinding out like a 2-0 win. 2-0 win for Fulham. Yeah, I'll keep the scores. Okay. Yeah. I will go with I'll go with a 1-1 draw. The reason being, since Laporte has come in, Mm-hmm. what Laporte? Lopetegui. Since Lopetegui. Lopetegui has come in, Wolves Financial has Liverpool pulled. had he Move has in had medals to a Barca. he's had a lot of he's done good work with Wolves, and Wolves have had a resurgence. Fulham Mhm. can afford to lose; they are in that position. Wolves cannot. Wolves So cannot what afford. Fulham can do is Fulham can play a couple of bench players as well. Yeah. So I think I will go with a 1-1 draw for Wolves. Oh, 1-1 draw, but it will feel like a win for Wolves. Okay. Everton, Aston Villa. Yeah. It's a home game for Everton. I mean, we all know what Sean Dyche did for the last. I think he has managed like 3 games for them, two at Goodison, and he has won both of them. And yeah, but I mean, I can see Aston Villa keeping aside the fact that they had a brain fade movement, and Martinez wanted to be the Vibhishan. But yeah, so I think we can say it might be 1-1 for Everton because Everton doesn't know how to score goals. They have lost Anthony Gordon as well. So, I mean, I did like what Alex Iwobi was playing that day in the derby. Yeah, Alex Iwobi was playing well. They have good defense. They have good defense. And it has been made better by the signing of Tarkowski and Connor Cody. I think one thing on which I would say Frank Lampard was spot on was transfers. He didn't know how to manage them, but at least he knew how to land them. yeah. The transfers that they brought in, especially defensively, they were good. Uh, the mistakes that they've made in the past, they're still suffering from them. And Mhm. but the move to move Iwobi into the midfield, that was Lampard. So Mhm. and that is paying off. So I will also go for. So I've seen Emery play against Sean Dyche, Mhm. and I know he struggles to break down. So I'm going to go for a 1-0 cheeky win for Everton. Mhm. Another Tarkowski header. I think something similar, like a set piece goal for Everton, and because Everton do not open up, Aston Villa will not be able to like score because most of Aston Villa's goal come from counter attacks. They're not Mhm. going to be able to counter attack against Everton. So I think it's going to be a 1-0 Everton. I'll be happy to see like this Jordan Pickford being smothered into the face. I mean, for what he did to Van Dijk. Uh, You know what? I just want Martinez to do that. What he did against Liverpool, na? That time wasting thing. Ball को लेके ऐसे पड़ गया जमीन पे. I hmm. loved Allison when he did the shit house tree. Martinez is such a shithouse. Anyway, Leeds Southampton. Uh, Home game for Leeds, but shitty defensively. Bottom place Southampton. It, it is a race for relegation, 6 pointer. which Relegation 6 pointer. which Leeds is not very good at. I mean, I love Leeds. I mean, they play without a defense. I mean, their defense is as good as having a pole there.
But I still can't understand why they bought Junior Firpo from Barcelona just because he was at Barcelona. It's like no manager And versus no manager. Both teams do not have a manager. So it ex- would be interesting. I And want Leeds to win. Only for that reason, I would go for a Leeds 1-0 win against Southampton, and I just hope Southampton doesn't get a free kick opportunity. Because then I think then it's a draw or a win or a giving I don't know what, but as the memes say, you son of a bitch, I'm in. I mean, the ball fucking goes in. it's better to give Southampton a penalty than to give them a free kick. The I और mean, मुझे तो the ये नहीं guy, पता चलता मुझे ये नहीं पता चलता चेल्सी spent 120 million on Enzo Fernandez. Just spend 10 million on James Ward-Prowse. कम से कम फ्री किक तो मार के जिता देगा तुमको. क्या कर हाँ, रहे हो? चेल्सी का कौन ले रहा है फ्री किक? Who knows? I don't know. I मिली नहीं don't know. इतने टाइम से. भाई उनके प्लेयर इतने हैं, स्टार्टिंग 11 में कौन आएगा वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. तो हम फ्री किक कहाँ से प्रिडिक्ट कर ले? मेरे को लगता है तुम्हारा वेज बिल सबसे ऊपर जाने वाला है लास्ट नेक्स्ट ईयर तो. किसका? तुम लोगों का आर्सेनल तुम का? लोगों का सॉरी क्या चेल्सी इतने चेल्सी प्लेयर बढ़ ली. चेल्सी को क्लियर आउट करना पड़ेगा क्योंकि जितने प्लेयर उनके हैं, पॉटर खुद भूल जाता होगा कि अरे ये कौन सा लड़का है, ये कहाँ से आ गया. लिवरपूल एनीवे, इज इंटरेस्टेड इन मेसन माउंट. हाँ, जूनियर जॉर्डन हेंडरसन. I mean, I think that would be Declan Rice rather than. I mean, we are also so basically what's happening is every good midfielder is being linked to Liverpool because everyone knows that Liverpool is in dire need of midfielders. We need to have at least like we need to buy at least three midfielders this season, I think like you'll the end get of the season this summer. I think you'll get Bellingham. Bellingham is going to be one. And then instead of going for a big name signing, I think you need to go for someone very unknown. Like, The problem with that is unknowns are young. but you need We to go for cannot someone. afford we cannot afford young. I mean, we both know what happened with Curtis Jones, right? We don't have midfielders between the age bracket of 25 29. That's the peak. We don't have them. We don't have Ruben Neves. Amrabat would We be do not. amazing. But he's too heavily linked with Barcelona, and Barcelona has a pull. And Barcelona, like you, if you come to Barcelona, you will play. Sorry, you will play Champions League. When there's no, you cannot, and Barcelona might win this season's La Liga. So there's a short, even if that hadn't been the case, there's a short chance you will play the Champions. तो कौन आएगा? Plus Barcelona has too much of a pull here. The only problem is Barcelona will play Pedriga, who will be the linchpin. That would have been Amrabat. And for that, I think Barcelona will go all in. And okay, Amrabat is too not too. I mean, they were ready to pay 3 million for a loan and 40 million for like the full deal. that's too much for Amrabat. That's too much. Really don't care about it. I think. I mean, one trophy and their stocks go high. I mean, they'll be playing again in the Champions League. A It's too win. much. Europa, if they beat Manchester United, which I think will be a good matchup in the second leg, what will happen is I feel like we both know as the season progresses or as your position improves in the competition, you get more money. And they and I think if Busquets goes this season, then I think a good chunk of the wage structure will also it'll also go down. They might get some respite. But yeah, let's see. Getting back to Leeds Southampton. Yeah, I think it will be what 1-0 for Leeds or a 1-0 1-1. Leeds. I'm going for a 1-1. 1-1.
Draw. 1-1. Yeah. What was your prediction for Everton Aston Villa? 1-0, As right? 1-0, 1-0 Everton. And for Leeds Southampton, I'm going to go for a 2-1 Leeds win. 2-1 Leeds win. Okay. So Leicester the big Arsenal. game. Leicester I Arsenal. mean, I saw. I like what you said in the video was like you are nervous when you are facing Leicester. You should They not. have the capacity to hurt. They have the capacity to hurt I mean, any team in the league. They can they score a have, couple of goals against any team in the league. So that but is the difference. they don't give them free kicks in dangerous areas. Madison is close to what Ward-Prowse is. Like he does good job, But they don't and have a defense. they That's the don't have a best part. defense. That Huh. that 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 is a problem for them. I mean, Danny Ward. Let's be honest, he's no Casper Schmeichel, Yeah. and Danny Ward is only playing as a the first footballer for Wales because Wales doesn't have a footballer like goalkeeper. Okay, so I'll go for a high scoring 4-3 Arsenal. Or 3 Arsenal win. 4-3 Arsenal. I'll go for 4-2 Arsenal win. 4-2. Yeah, that sounds more like. West Ham Forest. West Ham Forest. 1-0 to Forest. 1-0 Forest. Oh, that will be interesting. I mean, to be fair, honest did score Forest did score against City, City. Yeah, and but that's a really hard defense to break down. So, and with the form West Ham is in right now, fucking Emerson Royal is like scoring. So I will I think go 1-0 with Forest. I'll go with a 0-0. 0-0. 0-0. Oh, Bournemouth Man City. I just hope they don't get a 9-0 drop. Exactly. Yeah, we can see 4-0 to City or 4-0 City. 4-1, 4-0, 4-1. 4 I think 4-0. We can 4-0 go for. City. I will go with 1-1. Resurgence of Forest. 1-1. Parking the bus now, are we? Palace Liverpool. I want to win this match. I know, yeah. Just to But prove you wrong, I want to win. no, I said Bournemouth City is 1-1. Yeah, I know. Yeah. So I want to win that matchup between us. Oh, okay. And you will. You will. The draw is more of a hope than a prediction. So we'll do till Spurs Chelsea, right? Yeah. So to Palace and Liverpool. Palace is doing well. They are blowing hot and cold, but here I can see a 2-0 or a 2-1 Liverpool. 2-1 I just Liverpool. want I just want Liverpool to have a clean sheet, so I'll say 2-0. 2-0 Liverpool. I will go with a 2-1 Liverpool. Because it is Sellers Park. It is a difficult ground, but Liverpool have the momentum. And when Liverpool have the momentum, We can roll. roll. They roll. They roll any team that comes in there. But you know what? Finally, I think Liverpool, if we don't get that guy, Olise, a chance, I think we can. He is scoring free kicks very well. You can ask any United fan. They were sad. he is a United fan. Ulisse is himself a He was United. sad. He was so sad that he kicked such a great goal. Anyway, let's go to the mid Spurs off. Chelsea.
The First you bit say of Spurs Chelsea. the rivalry between two shit London clubs. The And don't forget West Ham, okay? the one team without a manager and the other team that should not have a manager. Spurs Chelsea. What is your prediction? You know what? The game against City with Spurs won. It was their assistant manager who was managing that game. They played well that game. The next match Conte comes, they lose. Yeah, That's the power of Conte. That's not. I don't think Tottenham is as bad. no, Tottenham's are not. Tottenham are much better than Chelsea. But I mean, you cannot just point it out on one thing that okay, yes, this is what they should be doing right because of what. Yes, they'll play in the Champions League for every season, or if they get that right, because they they have spent the money. It's just they are highly unlucky, I think. Yeah, But yeah, but what's you? also the thing is that Tottenham are consistently inconsistent. They will beat Man City, they'll lose to Leicester. Now they've beaten West Ham. Uh, who knows? They might give Chelsea the first win in like what God knows 14 decades. I mean, That's what they can do. 2023. I don't think I've won since 2023 started. They've only won one game. One game. I love being a Liverpool fan now and not a Chelsea fan. So I will go. So what's your prediction for Tottenham Chelsea? I want to hear your prediction first. This is fucking Spurs match. This is a game Chelsea cannot. If they lose this, Potter would be out of a job. Out. So they cannot lose this. Spurs cannot lose this because if they lose this, they would firmly be out of the. They will start slipping out of the top four race. I'm going to go for a. I can't see Chelsea scoring. I don't know how Chelsea scores. I don't know how Chelsea scores a goal. So, you know what? I'm going to go for a 1-0 Tottenham. Just to spite you more, I would go for a 2-1 Spurs. 2-1 Spurs. Yeah. And Because Zach they is can right. score goals. They can score goals. Spurs From can. where? Oh, Spurs can. Spurs can score Spurs five can. goals. Like that. Spurs can. Spurs can. Chelsea can. Can. I'm not saying they will or they should or they should have better team, better manager. But I think they can score one goal. I think it's more of a hope that I'm saying. I don't think they can even score a goal because like Potter was playing Mason Mount up front as a striker. He has lost Shitty his decision. mind. That's a shitty decision. I mean that shows the manager is under the pump. He has lost his mind. And so I think it's going to be a comfortable Spurs win. 1-0 or 2-0, but I'll go with 1. Okay. So I think that's 10 matches. And that's the first podcast. Went on for quite a long time. That went well. It went Went well. well, yeah. It went Yeah. well, but I think we will need more feedback from the listeners Yeah, sure, about what we please. are doing wrong. So just let us know what we are doing wrong, and we will try to work on it. If you've listened to this far, You know you're a football hats off fan. to you. You are a football fan. What I'm going to do is I'm going to chop this up into clips and upload clips of around 15-20 minutes because I think that's that. We'll see you next week. Thanks, Divyansh. We'll Yeah, meet again thank you. next week. Sure. Okay. And Okay. do not forget to like, share, and subscribe, as everyone says. And I'm going to say the same. Yeah, I don't And know yeah, if you like it, if you liked it, and sure. subscribe if you like football. So Do comment like where we can be better. And thank you. yeah, thank you. Thanks, Divyansh. Bye.